back to Aapki Kahani with Nimbu Pani Season 2. Yes, this is Aapki Kahani with Nimbu Pani, a new season we bring from Delhi, and we have a very renowned nutritionist and dietitian. She is very popular. She's come all the way from Uttaranchal. Her name is Manjula Singla. Welcome Manjula. It's really nice to have you here. You've come on a winter morning from Rudrapur and here we are in Delhi. I welcome you. Manjula, I'm going to give a very short introduction and then she can share her journey, how she is from a small city of Rudrapur, made herself so popular, and she's globally recognized, and she's been she has clients from other countries, not only from India. So this is real inspirational stories where people say that from metro cities, and this is from Rudrapur. She has clients in Nainital, all over Uttaranchal, and also globally. So tell us your journey, Manjula. I really want to hear because this is very inspiring. हम लोग सोचते हैं कि अरे बड़े सिटीज में ज़्यादा लोग एंड वहाँ भी स्ट्रगल होती है लोगों को. And you said you're from Ludhiana and settled in Rudrapur, and you have clients all over India and globally. So, yes. Thank you, Simi, for your kind words. All the great achievements start from very humble beginning. With the grace of God and hard work, success do come. And my story is no different. The journey of my success story started in 1990 when I completed my post-graduation in Foods and Nutrition from PAU Ludhiana and joined Christian Medical Hospital as a dietitian. Okay. Simi, you know, Ludhiana एक metropolitan city है और इस field का बहुत अच्छा scope भी था वहाँ पे. And I was also doing good. But after my marriage, in 1991, I came to Rudrapur. उस समय रुद्रपुर बहुत छोटा सा एक टाउन था. ना तो वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स थे और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं थे. लोग में डाइट और हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी. तो रुद्रपुर जैसे शहर में इस फील्ड को एस्टैब्लिश कर पाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. People didn't even understand who a dietitian is. Yes. But I was determined to bring awareness in this field. I started writing articles in newspapers and magazines, giving lectures in schools and colleges, and for initial few years I gave free OPDs. Wow. It was the most struggleful period of my life. Okay. But I never gave up. Yes, I can see that. Yeah. As the time passed, कुछ new hospitals वहाँ पर बने. I joined those hospitals जहाँ मैंने 8-9 years तक काम किया. And it was the result of 15 years of hard work and persistence that I succeeded in establishing my field in Rudrapur. Now I'm running my own clinic in Rudrapur named Singla's Diet Clinic, and I'm proud to share and that people not only in Rudrapur, not only in Uttarakhand, but all over India, even in foreign countries, people are following my diet therapies. Wow. So this is amazing. I feel this is a very inspiring story. We have dietitians in every, you find in my colony only I see 2 very good dietitians, and there you've established from a very small town where with your, I feel your commitment and your persistence, and I feel there's no age. You look very young, and you said you got married in 91. Yeah. It's the same time year I got married. So, but she looks very young. I think that's what her diet is all about. I'm sure we must be at the same age, but she looks much younger. It was really shocking. Thank you, Simi. So Manjula, I see that आजकल लोग बहुत pills, shakes और ये प्रोटीन डाइट्स फॉलो करते हैं. एंड आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक इज द सेफेस्ट, एंड व्हाट इज योर मंत्रा ऑफ स्टेइंग फिट एंड हेल्दी एंड लूजिंग वेट? See, there are countless weight loss strategies, diets, devices which are being marketed. And being desperate, people try these unconventional, even dangerous methods to reduce their bulge.
कुछ लोग शेक्स पी रहे हैं, कुछ लोग पाउडर्स खा रहे हैं, Yeah. some try weight loss pills and other follow crash diets. इन सब चीजों को लेने से एक बार तो हमें लगता है कि कुछ वेट रिडक्शन हुआ, हाँ. लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं ये सब चीजें दुगनी तेजी से वापस आती हैं। प्लस हमारी जो हेल्थ पर उसके इल इफेक्ट्स आते हैं। योर लिवर फंक्शन स्लोली, योर मेटाबॉलिज्म गोज डाउन, योर इम्यून सिस्टम गेट्स वीकेंड, आपका मसल लॉस होने लगता है, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी व्यूअर्स को यही गाइड करना चाहूँगी, देयर इज नो मैजिक वे टू लूज वेट विदाउट अ सेंसिबल डाइट एंड एक्सरसाइज. So it is better to consult a dietitian or a nutritionist. She is the one who can help you reduce weight in a healthy way possible. So that's how you feel कि लोगों को अपनी ट्रायल से नहीं कि ओके आज मैं ये कर लेती हूँ, दूसरे दिन कुछ अगले मंथ. I know lot of people I know in my friend circle today we are following high protein diet, then we'll go to the gym and then again we'll go to the to take a walk and be a regular follow some pattern. They are onto various gadgets. So how do you handle your clients? Singla's Diet Clinic is a nutritionally supervised weight release and health management clinic. We have a very different and natural approach to weight loss. हम लोगों के यहाँ भूखे रहने का कोई भी पार्ट नहीं होता. Wow. एक नॉर्मल डाइट पे ही हम लोग रिडक्शन गाइड करते हैं, because food is body's fuel, it is our body's requirement. अगर कम खाएंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी और आप जिस दिन वो डाइट छोड़ेंगे you will regain, it will bounce back. It happens that. So what we do at our clinic, we review your health and medical history. आपका BCA चेक किया जाता है, ब्लड स्क्रीनिंग चेक की करवाई जाती है, उसके बाद जो भी हेल्थ कंडीशंस निकल के आती हैं, आपका पूरा बॉडी नेचर हम स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक डाइट कस्टमाइज किया जाता है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फूड्स, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स and health supporting foods. So whenever you follow that combination, you reduce about 1 kg per week. Okay. तो वो जो कॉम्बिनेशन हम गाइड करते हैं उसमें एक नॉर्मल डाइट ही होती है. हम लोग पास्ता, सैंडविचेस, पोहा, इडली, सांभर, एक नॉर्मल डाइट पे रिडक्शन हो, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर डाइट. जब भी आप वो चीजें वापस खाएंगे तो फिर वेट गेन होता है. तो इसलिए हम लोग हमेशा ये गाइड करते हैं कि एक नॉर्मल डाइट पे रिडक्शन लें, ताकि जब दोबारा ये चीजें खाई तो वेट पुट ऑन ना हो. और दूसरी चीज रिडक्शन के साथ साथ जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है आपकी हेल्थ. तो हमारा मेन जो फोकस होता है वो आपकी हेल्थ पे होता है, और आपकी जो भी हेल्थ कंडीशंस थ्रू ब्लड स्क्रीनिंग निकल के आती हैं उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही हम डाइट प्लान्स कस्टमाइज करते हैं. रिडक्शन तो आता ही है, साथ में हमारी सारी हेल्थ कंडीशंस भी इम्प्रूव होती हैं. So basically you're not starving, you're having all the good cheat foods which we call. This is very interesting. I think I'm going to try for sure because I need it first. She's saying you can have pastas, you can have poha, you have normal diet, and this is very very, I feel it inspires you. Okay, खाने से भी weight lose हो सकता है. So yes, I feel this is for the viewers. This is Singla's Diet Clinic, and you can Google it also, and I'm going to share her contact details because this is losing weight by eating. Yes. Eat more and lose more. Yes. So tell me some. I'm sure इतने साल से आप as a dietitian हैं, and I feel you are a nutritionist because you are following. You're saying that आप लोगों की medical history को भी stable करते हैं. So any interesting case study which is close to your heart and which you'd like to share with our viewers there? Okay. Simi, we have disease management programs also. डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, पीसीओडी की आजकल प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है. पहले एक लेडी के 10-10 बच्चे हो जाते थे, आज एक बच्चा कंसीव करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये सब चीजें क्या है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, और स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो हम लोग डेली ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनकी बहुत यंग एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, वो सफ़र कर रहे थे. फ्यू मंथ्स बैक
एक गर्ल चाइल्ड मेरे पास आई, शी वॉज जस्ट 12 years old और उनका वेट था 75 kgs। जब हमने उनका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया तो उसमें डायबिटीज उनका डायग्नोस। इतनी यंग एज में आज बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। डायबिटीज इज या obesity, यस, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अकॉर्डिंगली हमने उनका डाइट प्लान कस्टमाइज किया और वीकली उन्होंने 1 kg पर वीक रिडक्शन देते हुए वेट तो रिड्यूस हुआ ही हुआ, टोटली उनका डायबिटीज भी रिवर्स हो गया, क्योंकि बेसिकली वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जैसे हमने डाइट करेक्ट की, थोड़ा एक्सरसाइज का एक पैटर्न हमने साथ में लिया, तो धीरे धीरे अपनी आप ही चीजें बैलेंस होती चली गई। This is amazing. I don't know how you handle being in Rudrapur in a small place and you are connected to so many people globally and in India. So can you name few of these celebrities who are taking your diet plans? You all must have seen movie Tanu Veds Manu. उसमें जो गर्ल है कोमल, Yeah. Kangna's friend. Yes, yes. She The followed. the girl who's married to that Saudi Yeah, guy. yeah, Okay. She followed my diet in 2014 Huh. and reduced about 12 kgs of weight. Wow. After her delivery, she again put on her weight, and last few months back again she joined my program and visited my clinic also. I know आपने बहुत हार्ड वर्क किया and prove किया, but how do you feel when you get these awards and recognitions? You've been honored as the best dietitian in Uttaranchal, and can you name some more recognitions and awards which you've got? My name has been incorporated in Leading Ladies of India by Jan Parishad Bhopal, and recently I was awarded as Woman of Excellence in 46th National Women's Summit held in Delhi. Wow. It So really- how do you feel? It really ठीक है, काम feels तो great. किया। It really feels great. Yeah. So this 1000 women is like from India. You've Yeah, been in the Yeah. book which Yeah. you mentioned. Yeah. Okay, great. So I feel काम तो अच्छा लगता ही है, but जब ये recognition और मिलता है। awards मिलते हैं, तो आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है उस चीज के लिए, और आगे आने के लिए आपको इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है. So we have a very renowned dietitian and who is a multi-talented person, Manjula Singla. We've interviewed her and asked her enough questions to know how good and unique she is. But yes, it doesn't end. She's also written 2 books on one for moms. This book is especially for moms, secret recipes, some nice healthy recipes for kids. So would you like to talk about this book? This is my first book, Smart Foods and Healthy Kids. Actually, it is a recipe book and a food guide for children as well as mothers. बच्चों के ब्रेकफास्ट, टिफिन स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, डेजर्ट, स्मूदीज की बहुत सारी वैरायटी हमने इसमें दी है। एंड द यूएसपी ऑफ दिस बुक इज दैट दिस ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ दिस बुक इज कैलोरी काउंटेड, और ये इंस्टेंट कुक बुक है। सभी रेसिपीज को कुक करने के लिए 5 to 10 मिनट्स ही लग रहे हैं। Okay. So आजकल जैसे if you see बच्चे इतनी unhealthy diet and junk food में हैं, I feel this book will help mothers moms. as well as children. Okay. So we have the second book. Would you like to tell something about this book? Yeah, 100 weight loss secrets. In this book, I have given 100 evidence-based tips to reduce weight in a natural and healthy way. So you all can read this book and reduce your weight at home. Great. So not only I feel, but yes, they should get in touch with you and then take this book. Yeah, That's the best way. Yes, you personally should take some guidance from the dietitian also. These books doesn't help, because there are certain things initially which a dietitian can help, and then you can pick up the recipes from there. So thank you so much, Manjula. It's really a delight. Winter day, you show your commitment, and I feel it's really, Thank you for having me here. It's my pleasure being here. Thank you so much.